for creating more revenue. Along with that, I feel relatively media is very open, very independent, more independent probably, as many prime ministers would claim, than European media or American media or other medias, you know. Our media is beyond any sort of control, particularly the social media. The print and electronic is still regulated. They are also, well, all of us agree on regulations, but digital space and social media has created a new milieu, a political milieu, in which people are thinking, having discourses, discussions. So these are the challenges which is not being catered for by relatively traditional media. I mean, when I was a young kid, on the breakfast, we would read the Jung or the Mashriq newspaper in the morning. But when I wake up now, I have to go through and scroll all my WhatsApp messages, see what is happening on the YouTube, you know, or all the vlogs and the rest of the associated activities. So this is a new entrant into the political spectrum of this country, and they are becoming very popular. And that popularity in last 2.5 years has turned into a new level, and it's a challenge and opportunity both to the traditional media, be it print or electronic as well. And it has its own political colors. It has its own political colors and quite organic. And for very right reasons. In any country, in the manner, the mushroom growth which we are having over here, if it would have been there, and the kind of political polarization we are experiencing right now, would have been a very favorite tool for anyone to express themselves. Whenever there are depolarization, as we were talking on that table, you go to the digital space and social media, how Middle East is being portrayed, the entire conflict over there, and how these tools on both sides, be it pro-Israeli or pro-Palestinian, both are using those tools to advance their narrative, to send their messages, and these tools have become very, very effective in terms of messaging. So this is another area which I feel Pakistan is quite, I wouldn't use the word struggling, but yes, in a way, it is a struggle. That how do you balance out that at the same time you don't want to stifle and put a stop to all these modern gadgetries and tools, and at the same time you try to design and develop a regulatory program where the terms of references could be agreed generally with the society, how to go about it. So this is the kind of conversation which is probably lacking at the moment. We need one. In Parliament, outside Parliament, we have got half of the Parliament, at least Senate can take a lead role on that if they choose to. If not, then again, it has to be left to the next Parliament when it comes into existence. Domestic political crisis, if it is one, I don't see it as a crisis. For me, it's one of the routine transformation in post-2008 experiment of ours. 3 of the parliament stints have been completed. It's a good continuation in the transitional democracy of Pakistan. And if we continue in this process, I'm quite optimist on that account that there would be more political education of the participants, of the voters, of the political parties, and gradually and slowly people will try to link the political parties with their delivery promises and delivery systems. If they don't, maybe next 2, 3 or 4 stint of parliaments, the entire transformation
will face a very serious challenge from the masses. Because at the end of the day, the aspiring of legitimate political power by any political party is due to promise of a service delivery. If you do not go for the service delivery to the people, the entire argument, legitimate argument, loses its moral compass. And the performance of government has to be linked with the essence of democracy. So if someone is genuinely a believer in the democratic dispensation, they have to have service delivery better. Because no system is dogmatic. It is the trial and error system which many of our Western counterparts have learned on the Western Hemisphere and on the European continent particularly. And those experiences have also been transformed with different kinds of social and historical experiences. And there is a lot for us to learn. And there is a lot for us to contribute also. It is not exactly that we have to have a replica from there. We can learn and we can contribute. So it has to go both ways. We have stopped probably contributing our side. We're just looking at different models, Jeffersonian democracy, Westminster model of democracy, French democracy, or German democracy. There is no model which could be, let's say, we refer to as a Bhutan's model of democracy, or Indian model of democracy, or Nepalese model of democracy, or Pakistani model of democracy. So the contributing part is missing, or Turkmen model of democracy. Well, democracy is not a noun which has an intellectual property right by the Europeans. So it's a practice or an attitude linked with human behavior in terms of politics by different nations, by different countries, in a different manner, in different historical contexts. So we need now to contribute also on that account. Have I passed my 20 minutes? No, sir, you can go. Okay. So I think so. Let's conclude this instead of just delivering a talk. I would take more of an interactive session and take more questions and a lot more time to that. Wouldn't it be a good idea? I think so. Yeah. So let me conclude then. So that's how I would try to summarize the challenges faced by Pakistan and the kind of response mechanism we are thinking about it. And now I'll open the floor for Q&A. यही तो हम सब चाहते थे, जैसा कि हमने देखा कि जी नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ब्रेकफास्ट विद पीएम निजी टीवी के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर गौर किया जा रहा है। पीआईए की निजकारी ज़िम्मे अव्वलीन तरजीह होगी। उन्होंने कहा कि इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए भी इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तान में हुनरमंद और ज़हीन अफराद की सलाहियतों को बरूए कार लाना होगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते सरमायाकारी से मुतालिक अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। बैरूनी सरमायाकार मादनियात, ज़राअत और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेंगे। उन्होंने कहा कि SIFC के जरिए सरमायाकारी पॉलिसी में इस्लाहात की जा रही हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम न सिर्फ खित्ते बल्कि बैरून दुनिया से भी सरमायाकारी ला रहे हैं। बैरूनी सरमायाकार मादनियात, ज़राअत और मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। SIFC के ज़रिए सरमायाकारी पॉलिसी में इस्लाहात जारी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोयटा तफ्तान रेलवे लाइन को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हुकूमती अखराजात में कमी के लिए भी मुख्तलिफ लाहेमल वज़ा किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि माशरती इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए मीडिया का किरदार अहम होता है। पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा कि खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर गौर किया जा रहा है। पीआईए की निजकारी अव्वलीन तरजीह होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते सरमायाकारी से मुतालिक अच्छी खबरें मिलेंगी। बैरूनी सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि SIFC के ज़रिए सरमायाकारी पॉलिसी में इस्लाहात जारी हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर निजी टीवी के प्रोग्राम ब्रेकफास्ट विद पीएम में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए भी इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तान में हुनरमंद
और ज़हीन अफराद की सलाहियतों को बरोए कार लाना होगा। फ़नी तरबियतों का भी आगाज़ किया जा रहा है। आइंदा बरसों में 10 लाख नर्सों को तरबियत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में आने वाली सरमायाकारी के हवाले से भी आइंदा हफ्ते अच्छी खबरें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि हम न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया से भी, बैरूनी दुनिया से भी सरमायाकारी पाकिस्तान में लाएंगे। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेंगे। इस वक्त निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। Q&A सेशन इस वक्त जारी है। इस प्रोग्राम में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ are already on those bilateral trade agreements with many countries in the region, including Azerbaijan, Uzbekistan, and the rest. Exim Bank has initiated its service related to all the export finances would be available on that platform. So there is a progress on that account too. We gave all the remaining licenses to the Exim during this caretaker government. So all of you would see a lot of improvement on that account, but we do appreciate and understand that these were the areas which were missing. The region is there, the potential is there, but the framework for logistic, for the trade agreements, for the finances were the missing part. So there is a deliberate work on that, and there will be an outcome on those deliberations quite soon, inshallah. निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त निजी टीवी के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हुनरमंद और ज़हीन अफराद की सलाहियतों को बरोए कार लाना होगा। फ़नी तरबियत के मुख्तलिफ प्रोग्राम जिस्म में शुरू किए जा रहे हैं। आइंदा बरसों में 10 लाख नर्सों को तरबियत दी जाएगी। बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते सरमायाकारी से मुतालिक अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। उन्होंने कहा कि बैरूनी सरमायाकार न सिर्फ खित्ते बल्कि बैरूनी दुनिया से भी हम लाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बैरूनी सरमायाकार मादनियात और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। SIFC के जरिए सरमायाकारी पॉलिसी में इस्लाहात जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर गौर किया जा रहा है। इस हवाले से PIA की निजकारी हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त निजी टीवी के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हुनरमंद और ज़हीन अफराद की कमी नहीं है, इनकी सलाहियतों से इस्तेफ़ादा करना होगा। फ़नी तरबियत के मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे और सरमायाकारी के हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हम न सिर्फ खित्ते बल्कि बैरून दुनिया से भी सरमायाकारी ला रहे हैं। बैरूनी सरमायाकार मादनियात और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि SIFC के जरिए सरमायाकारी पॉलिसी में इस्लाहात की जा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोयटा तफ्तान रेलवे लाइन को भी अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हुकूमती अखराजात में कमी के लिए मुख्तलिफ लाहेअमल वज़ा किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि माशरती इक़्तिदार के फ़रोग़ में मीडिया का हमेशा अहम किरदार हुआ करता है और पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है। उन्होंने ये कहा कि दुनिया अपने मामलात को सोशल मीडिया के ज़रिए आगे बढ़ा रही है। गज़ा की सूरत हाल पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गज़ा की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चीन में BRI फोरम के मुख्तलिफ सरबराहान ममलकत से मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त ब्रेकफास्ट विद PM में शुरका के सवालात के जवाब दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त निजी टीवी के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर गौर किया जा रहा है। PIA की निजकारी हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। सरमायाकारी के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते सरमायाकारी के हवाले से अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी और बैरूनी सरमायाकार न सिर्फ मादनियात और ज़राअत बल्कि दीगर भी कई शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान में हुनरमंद और ज़हीन अफराद की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि इनकी सलाहियतों से इस्तेफ़ादा करना होगा। इसके लिए मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम्स भी शुरू किए जा रहे हैं। आइंदा बरसों में 10 लाख नर्सों को तरबियत दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि PIA की निजकारी हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। खसारे में चलने वाले जितने भी इदारे हैं उनकी निजकारी पर गौर किया जा रहा है।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त निजी टीवी से गुफ्तगू कर रहे हैं और इस वक्त Q&A सेशन जारी है। मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। उन्होंने कहा कि हुकूमती अखराजात में कमी के लिए लाहेमल वज़ा किया गया है। हुकूमती अखराजात में कमी की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है। देखिए, SIFC का जो प्लेटफॉर्म है वो प्राइमरली इसकी कंटिन्यूएशन का जो एक एंटिसिपेशन या खौफ थी कि चीज़ें डिसकंटिन्यू हो जाती, वो उसको एड्रेस करने के लिए SIFC क्रिएट की गई थी और उसको स्टैट्यूटरी पास दी गई, उसको कानून की सपोर्ट मिली। मिलिट्री सिविल दोनों उसका हिस्सा बन गए और चूँकि ज़ाहिर है हम 2 महीने 2.5 महीने में अगर ये तब्दीली आ भी जाती है, एक जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट और मजबूत कंपोनेंट है मिलिट्री, वो तो उसका हिस्सा कंटिन्यू करेगी, तो वो उसकी सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करेगी और इस वजह से मुझे कोई उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है जहाँ तक इसकी कंटिन्यूएशन का ताल्लुक है। दूसरा, मैं एग्री करता हूँ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को, डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर्स को अगर हम इनकरेज नहीं करेंगे, FDIs का अपना एक इम्पैक्ट होता है, वो आते हैं लेकिन फिर वो रिपेट्रिएशन ऑफ द वेल्थ विच इज़ देयर राइटफुल राइट, वो $10 अरब के साथ आएंगे, 20 साल बाद $50 अरब के साथ वापस चले जाएंगे। So that is a phenomena which we have to be very careful also. I have always dreamed that I should have at least 1,000 local billionaires. मैं वेल्थ क्रिएशन पे यकीन रखता हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ उसमें मेरा हिस्सा है, मैं आपसे हिस्सा मांगता हूँ और वो हिस्सा है टैक्स। मुझे सिर्फ आप पैसा बनाएं, मैं आपको टैक्स करूं, उस टैक्स से मैं स्कूल बनाऊं, उससे मैं अपनी डिफेंस की रिक्वायरमेंट पूरी करूं, अस्पताल बनाऊं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेरा काम है। बिजनेस करना मेरा काम नहीं है। Lies a fair argument, there is no need for the government to do business. The business has to be done by the businessman. और पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं। हमें ये चाहिए कि we need to create 1,000 billionaires. That wealth creation has to come through domestic investors. The foreign investor would stimulate that environment for us of growth and wealth creation. We cannot just go for protectionism. कि हम प्रोटेक्शनिज्म में चले जाएं और बाकी दुनिया के साथ ना ट्रेड करनी है, ना इन्वेस्टमेंट लेनी है, गुड्स और सर्विसेज की. सो वी हैव टू हैव इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद देम. Our investors will go to the other part of the world and the investors of the other part of the world would come here. So the cycle has to be very natural and organic. But yes, I agree कि हमें अपने domestic investors को they are more than welcome on the platform of the SIFC. अगर आप लोग चाहते हैं कि फॉर्मल कोई इनविटेशन वो भी हम आपको भिजवा देंगे, कोई बॉडी कोई स्ट्रक्चर. मेरे ख्याल में आर्मी चीफ खुद भी बिजनेसमैन से मिले थे कराची और लाहौर में. मुझे भी एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था कराची में मिलने पे. हम इसको फर्दर भी चैनलाइज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, माइनिंग में, IT में, जहाँ जहाँ आप लोगों को लगता है कि हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को आना चाहिए, आप हमें बहुत ज़्यादा वेलकमिंग और ओपन पाएंगे. वी आर वेरी प्रो बिजनेस पीपल. थैंक यू. मुल्की सरमायाकारों और ताजरों की हौसला अफजाई ज़रूरी है. प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि SIFC के प्लेटफॉर्म पर हम डोमेस्टिक और लोकल इन्वेस्टर्स को भी खुशामदीद कहते हैं. वो बिल्कुल आएँ और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें. हम उनके लिए ओपन डोर्स रखते हैं. SIFC के ज़रिए सरमायाकारी पॉलिसी में इस्लाहात की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि हम न सिर्फ खित्ते बल्कि बैरून दुनिया से भी इन्वेस्टर्स लाएंगे. पाकिस्तान में हुनरमंद और ज़हीन अफराद की सलाहियतों को बरूए कार लाना होगा. निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त ब्रेकफास्ट विद PM निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते सरमायाकारी से मुतालिक अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी. प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में हुनरमंद और ज़हीन अफराद की सलाहियतों को बरूए कार लाना होगा. इस ज़िम्मे मुख्तलिफ फ़नी प्रोग्राम्स भी, तरबियत के प्रोग्राम्स भी शुरू किए जा रहे हैं. आइंदा बरसों में 10 लाख नर्सों को भी तरबियत दी जाएगी.
اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کوئٹہ تفتان ریلوے لائن کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ خسارے میں چلنے والے اداروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری پر غور کیا جا رہا ہے اور PIA کی نجکاری ہماری اولین ترجیح ہے۔ میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان میں میڈیا آزاد اور خود مختار ہے۔ دنیا جو ہے وہ اپنے معاملات سوشل میڈیا کے ذریعے آگے بڑھا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین میں BRI فورم میں مختلف سربراہان مملکت سے ملاقاتیں ہوئیں اور یہ ملاقاتیں بہت مفید رہیں۔ ملکی سرمایہ کاروں اور تاجروں کی بھی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ SIFC کے پلیٹ فارم پر انہوں نے لوکل انویسٹرز کو بھی خوش آمدید کہا ہے۔ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ اس وقت نجی ٹی وی کے ایک پروگرام میں محو گفتگو ہیں۔ اس وقت Q&A سیشن جاری ہے، مختلف سوالات کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے اس سے قبل گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فنی تربیت کے مختلف پروگرام شروع کیے جائیں گے جن میں ہنرمند اور ذہین افراد کی صلاحیتوں کو مزید نکھارا جائے گا۔ انسانی وسائل کی ترقی پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اس میں تمام تر اقدامات جاری ہیں۔ آئندہ برسوں میں 10 لاکھ نرسوں کو تربیت دی جائے گی۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیراعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان میں آئندہ ہفتے سرمایہ کاری سے متعلق اچھی خبریں ملیں گی۔ ہم نہ صرف خطے سے بلکہ بیرون دنیا سے بھی سرمایہ کاری لا رہے ہیں اور یہ بیرونی سرمایہ کار معدنیات، زراعت اور مختلف شعبوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ SIFC کے ذریعے سرمایہ کاری پالیسی میں اصلاحات بھی جاری ہیں۔ کوئٹہ تفتان لائن کو بھی ریلوے لائن کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے بھی ایک لاہ عمل وضع کیا جا رہا ہے۔ معاشرتی اقدار کے فروغ کے لیے میڈیا کے کردار پر فوکس ہے FTA سے لے کر ایئر کنیکٹیویٹی۔ ابھی ہم نے سینٹرل ایشیا میں ایک ایئر لائن کو وہ دی ہے، اجازت نامہ دیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ فلائٹس سٹارٹ کریں۔ آذربائیجان کی ایئر لائن آ رہی ہے، مختلف ایئر لائنز۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ 2 گھنٹے کی فلائٹ اگر آپ ترکمانستان پہنچیں یا تاشکند پہنچیں، اس کو وایا مڈل ایسٹ کرتے ہوئے آپ 6 گھنٹے 8 گھنٹے میں کیوں پہنچ رہے ہیں؟ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایڈریس ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اور قربت نظر آئے گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ اس میں اٹ از آن دا ٹاپ پرائرٹی، ہم لگے ہوئے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نجی ٹی وی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس وقت مختلف سوالات کے جواب دیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے انہوں نے مختلف جن نکات پر گفتگو کی ہے ان میں سے چند یہ ہیں کہ پاکستان میں خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری پر غور کر رہے ہیں اور PIA کی نجکاری ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ ہفتے سرمایہ کاری کے حوالے سے اچھی خبریں سننے کو ملیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف خطے سے بلکہ بیرون دنیا سے بھی سرمایہ کار پاکستان میں لائیں گے اور یہ سرمایہ کار پاکستان میں زراعت، معدنیات، مائننگ اور ان سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ SIFC کے پلیٹ فارم پر بیرونی سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ ہم لوکل سرمایہ کاروں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ SIFC کے ذریعے سرمایہ کاری پالیسی میں اصلاحات بھی کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی وسائل کی ترقی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ پاکستان میں ہنرمند اور ذہین افراد کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہوگا۔ مختلف فنی تربیت کے پروگرامز بھی زیر غور ہیں۔ آئندہ برسوں میں 10 لاکھ نرسوں کو تربیت دی جائے گی۔ وزیر اعظم بریک فاسٹ وتھ PM میں شرکاء کے سوالات کے اس وقت جواب دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملکی سرمایہ کاروں اور تاجروں کی بھی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ SIFC کے ذریعے سرمایہ کاری پالیسی میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ اس پلیٹ فارم پر بیرونی سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک سرمایہ کاروں کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری پر انہوں نے کہا کہ غور کیا جا رہا ہے۔ جو ادارہ ریونیو اکٹھا نہیں کر سکتا وہ یقیناً خسارے میں ہے۔ اس سے ملک ترقی نہیں کر سکتا اور PIA کی نجکاری ہماری اولین ترجیح ہوگی۔ انسانی وسائل کی ترقی کے حوالے سے اقدامات پر بھی انہوں نے کہا کہ اس وقت اقدامات جاری ہیں۔ پاکستان میں ہنرمند اور ذہین افراد کی کمی نہیں ہے۔ یقیناً پاکستان میں ان افراد کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہوگا اور پاکستان بے شک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ ان وسائل کا بہترین استعمال کرنا ہوگا۔ نگراں وزیر I'm undermining the value of far-flung areas. The part of problem with our governance structure has been that we are very urban-oriented people, and our paradigm of development has been that we have developed Peshawar, we have developed Pindi, we have developed Karachi, we have developed Lahore, we have developed Quetta. But the horizontal development of the areas
has been utterly and completely ignored. What can or what should or what would I do in these 2.5 months is a bit ambitious for me. We should, but we can't. Due to the paucity of time. Of course, these are the long-term projects, this is the long-term planning. I do have a view on that, and I completely subscribe that until and unless you do not shift the paradigm of this development towards the main or peripheral Pakistan, if we can call it, these sort of challenges would haunt us for long. What is the idea of the state for someone who's in South Waziristan or North Waziristan or in Mand or in Bullo? He doesn't have access to clean drinking water. His child cannot go to the school. If his wife gets ill, she cannot receive treatment. So these are the things which would be translating in his mind, and he is developing a relationship with the state or with the idea of the state or government or country. So for that, primarily, you need a local government, not a caretaker government. And where is the local government? No one is interested in this country in local government. So at the Union Council level, there has to be an accountable and elected or nominated person, whatever the system is. And that person has to, or that institution has to cater for all the things to make that one individual secure enough who could identify himself with that country or state. He is the one or she is the one who is marginalized. So the answer lies in this local government systems. And I don't want to accuse anyone who's interested in the local government. The provincial tier, the national tier, they were resisting 18th Amendment. And one of the condition of the 18th Amendment was that there had to be a provincial finance commission. Has anyone talked about the provincial finance commission? Because the financial resources had to be distributed on the same formula advocated against the federation. The districts would have been advocating same with the provincial capital. That a district, let's say on the basis of backwardness, demography, and the rest of the factors they have to cater for and attract particular funds. That never happened. And we created a new center of the excellence of political power in the name of Chief Minister, and all the politicians are running to be the Chief Minister of the provinces. Because the entire political and financial power is centralized in that one office. So it has become so lucrative, and it is the emblem and the emblem of civil supremacy and democracy, and we are revolving around all those fancy ideas without realizing that how is it translated into the service delivery of the governance system. So this is part of the problem, but this is my view, and a view based on the observation of the system. We'll see how it goes. आखिरी सवाल है। नाज़रीन, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त निजी टीवी के एक प्रोग्राम में महवी गुफ्तगू हैं। इस वक्त शुरका के मुख्तलिफ सवालात के जवाबात दिए जा रहे हैं। PM की जानिब से मुख्तलिफ निकात पर उन्होंने गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर गौर किया जा रहा है और इस में अव्वलीन तरजीह हमारी PIA की निजकारी होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि SIFC के ज़रिए सरमाकारी पॉलिसी में इस्लाहात की जा रही हैं। पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते सरमाकारी के हवाले से अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। बैरूनी सरमाकार, मादनियात, ज़राअत समेत पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी करेंगे। उन्होंने कहा कि SIFC में प्लेटफॉर्म पर डोमेस्टिक और लोकल इन्वेस्टर्स को भी खुशामदीद कहेंगे। ज़रूरी है कि अपने मकामी इन्वेस्टर्स की भी हौसला अफजाई की जाए।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हुनरमंद और ज़हीन अफराद की भी कोई कमी नहीं है। इनकी सलाहियतों को बरोए कार लाना होगा और इनसे इस्तेफ़ादा उठाना होगा। इस दिन में फ़नी तरबियत के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी शुरू किए जा रहे हैं। आइंदा बरसों में 10 लाख नर्सों को तरबियत दी जाएगी। इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए इक़दामात ज़ेर ग़ौर हैं। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर ने निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती अखराजात में कमी के लिए भी लाहेमल वज़ा कर रहे हैं और खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोयटा तफ्तान रेलवे लाइन को भी अपग्रेड किया जाएगा। गज़ा की सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि गज़ा की हालत और सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है। पाकिस्तान इसकी मज़म्मत करता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते सरमाकारी से मुतालिक अच्छी खबरें भी मिलेंगी। बैरूनी सरमाकार हम न सिर्फ खित्ते से लाएंगे बल्कि बैरून दुनिया से भी हम सरमाकार पाकिस्तान में लेकर आएंगे और साथ ही साथ SIFC के प्लेटफॉर्म पर हम लोकल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को भी खुशामदीद कहेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर इस वक्त You are already known throughout the country and your prime identity is not as a political economist but as an artist, a production of NCA. And I, as a kid, remember you when you used to appear on different dramas, national media, and yes, of course, we've always been a huge fan of yours. We need to define poverty if we want to talk about the dream. What is poverty? How would we define poverty? Is it only a disadvantageous material situation? Or there is a emotional, spiritual, internal part in which people are disadvantageous materially at times, but they still term themselves very rich. It comes to the Eastern ethos and values. Was Shams Tabriz a poor or rich? Was Ghalib poor or rich? He's quite in a begging situation all his life, thanks to the British colonizers. And not to you, Jane. You're not part of that. So we need to have those kind of discussions and discourses in this country. Material advancement is important. I do not undermine the value of that. But at the same time, there is another aspect to human soul. And the empowerment of the people, they should be empowered to think. They should be empowered to express what they think. They should be empowered to read, write, create, make, for that very purpose for which human has been realized on this planet. That realization or the self-actualization process is one of the most important journey. And any country, in any government should have a environment, enabling environment to have its own people who are protected and have those safety nets to create that ambience, to create that environment. We should be collectively working towards that end goal. That is the end goal. And my honest opinion is that Pakistan was actually created for this purpose, where people are not just empowered, but they are primarily, they would take away all the shackles, internal shackles, and their soul would be free to have that journey. They would be worshipping the transcendental, but all the material would be at his or her disposal. The material cannot be placed as God. This is one of our contests with capitalism. Though we do agree with certain shades of capitalism when we try to create 1,000 millionaires. But this is our part of contribution towards that capitalist system. That there has to be another part of human life, shade, nuance, which contributes on non-material front. And that non-material front, even at times, get monetized.
What is the value of Kundan Lal Sehgal in today's Coke studio? What is the value of Begum Makhtar in value of Coke studio? You know, so these are, we are having a continuation. We are a civilization. We are a culture. We have got diversified poetic experiences, linguistic experiences. Look at our collective memory. We are communicating with one another in English because we have been a British colony for 200 years. The Central Asian Turks have ruled this region. So there are almost more than 3,000 words of Urdu language coming from Uzbeki language. So there are Turkic influence, there is Persian influence, there is Arabic influence, there is a Sanskrit influence. So this is all creating a collective memory which we call Pakistan. So Pakistan is quite rich. I never take myself or my nation as poor. Yes, there are certain material disadvantages. We are at a materially disadvantaged situation due to some incompetence, governance incompetence of ours. We can address that. We will address that, and we should address that. But the journey is larger and bigger than that. निकरा वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ इस वक्त निजी टीवी के एक प्रोग्राम ब्रेकफास्ट विद पीएम में गुफ्तगू कर रहे हैं। मुख्तलिफ शुरका के सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुख्तलिफ निकात पर बातचीत की गई है प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ की जानिब से, जिनमें यह है कि खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी पर हुकूमत की जानिब से गौर किया जा रहा है। इदारों से रेवेन्यू नहीं कमा सकते तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, और इस में ख़ास तौर पर PIA की निजकारी हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। As you would appreciate, there are constitutional challenges. Agriculture is a devolved subject with the provinces. Retail, we are also mulling over this idea, how to go about it. Shall we have a fixed rate of the tax, or it should be variable? But it has to be part of the tax net. There is no doubt on that. We are working on it, and these are the areas which are related to these are forthcoming FPR reforms. Thanks. वज़ीर-ए-आज़म साहब की कुछ मसरूफियात हैं, अदरवाइज निकरा वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की निजी टीवी से गुफ्तगू आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आइंदा हफ्तों में पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, और बैरूनी सरमायाकार न सिर्फ पाकिस्तान में मादनियात और ज़राअत बल्कि मुख्तलिफ शोबों में भी सरमायाकारी करेंगे, और न सिर्फ हम खित्ते से बैरूनी सरमायाकार लाएंगे बल्कि बैरूनी दुनिया से भी सरमायाकारों को यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुल्की सरमायाकारों और ताजरों की भी हौसला अफजाई ज़रूरी है। SIFC के प्लेटफॉर्म पर हम लोकल इन्वेस्टर्स को भी खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में हुनरमंद और ज़हीन अफराद की सलाहियतों को बुरोए कार लाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़नी तरबियत के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी शुरू किए जा रहे हैं, और आइंदा बरसों में 10 लाख नर्सों को तरबियत दी जाएगी। इंसानी वसाइल की तरक्की बिलाशुबा एक अहम हिस्सा है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए इसमें मुख्तलिफ इक़दामात जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी लेकर आएंगे, और न सिर्फ खित्ते से बल्कि बैरूनी दुनिया से भी सरमायाकारी आएगी, और आइंदा बरसों में पाकिस्तान में बेहतरीन सरमायाकारी होगी। पाकिस्तान बिलाशुबा कुदरती वसाइल से मालामाल है। बैरूनी सरमायाकार न सिर्फ मादनियात ज़राअत बल्कि मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से कहा गया कि कोयटा तफ्तान रेलवे लाइन को भी अपग्रेड किया जाएगा। गज़ा की सूरत हाल पर भी वज़ीर-ए-आज़म ने बात की, और उन्होंने कहा कि गज़ा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है।